learn something from you also. So the first Definitely. Ritesh Shani and then Gauri Agrawal. And Yes, sir. here is Vishal Mehta and Bhumika Singh and Hello, sir. Asrita Verma and Avastha Tyagi. So first of all, good morning to all of you. And I just wanted some few introduction about you. So Ritesh Sani, I know him earlier. He was working with me in the Ajay Adani Ventures Limited, and we are in the same team. So I know Ritesh well. So coming to the next, Gauri, just explain a few things about you, that what you are Yes. doing, what your qualification and all. Sir, I'm so sorry to interrupt, but is it all right if we record the session? We Yeah, need sure, why to. not? Ritesh, please record the session, no? Okay, okay. So hello, sir. My name is Gauri Agarwal. So I'm pursuing my MBA in logistics and supply chain from UPS University only, and Okay. I am so I'm not very sure as of now about which sector I wanna go to, and I'm just exploring different sectors. So I just wanna learn a lot from you regarding how it would be in your sector and what all opportunities we have there. Okay, fine. And from you have done BBA or something? What you before MBA? Right. No, sir. So I have done I've done a PSc in agriculture Okay, good. from Noida. Yeah. You are from Noida? No, so I'm originally from Uttar Pradesh, Muradabad, and Okay. I have done my bachelor's in Noida and doing my master's in Dehradun. Good, good. Okay, fine. Vishal, just explain something about you. Good morning, sir. My name is Vishal Kumar, and I'm from Jharkhand. I completed my BBA from Amity University, Jharkhand itself, and currently pursuing my MBA program in logistics and supply chain from UPS Dehradun. Okay, fine, good. Bhumika. Good morning, sir. Sir, I'm Bhumika Singh, and I have completed my graduation from Delhi University in BA Economics Honors. And currently, I'm doing MBA in Logistics and Supply Chain. Good, yeah. Economics from Delhi University. Good, fine. And now, what her name is? Asrita Verma. Ash. Yes, sir, Ashrita. Yeah, okay. Asrita, just tell me about few things about you. I think Sir Ashrita is having a network problem. I will just message her once more. Till then, Avastha can continue. Yeah, sure. Then the next one is Avastha Tyagi. Yeah. You people are having some network problem or mind problem. I don't know. Yes, no, I think it's from their side only. We can hear you. Okay. Avastha, we are not getting your voice. We are not audible. Ah, yeah, okay, fine. So, my full name is Bhagya Aditya, and properly I'm from Bihar.
and I have done BTech from Greater Noida, and I have done BTech from mechanical engineering. And overall, I have experience of 9 years in oil and gas sector. Previously, I was working in the HPCL as a contract. Then after I switched to the Indian Oil Adani Ventures, and there I was working in the operations department as well as in maintenance. And now currently I'm just working in the Repono Limited in the Bangalore location. My client is MRPL. Previously, the client was the HPCL, also PSU sector, and now also from PSU sector there from MRPL, the Bangalore refinery terminal. So I have overall experience of 9 years, and currently I'm just working as a OEM in charge. It's the operation and the maintenance both I'm handling. So Okay, basically, if you just see my past, I have worked in the planning officer also in the HPCL for the few years. Then after I switched to the operations department fully, and in the operation itself, I worked I think 4.5 years, and currently I'm just working in the Repono Limited as a full in charge, as a OM in charge. So I'm just telling you, it's the oil and gas sector. So I'm just telling you briefly what is the logistic we are doing here. So in the logistic, we are handling vessel operations. Vessel operations is also there. So from the vessel operations, we are taking product, okay, and we are just dispatching the product to the company. So suppose previously I was working in the Indian Oil Adani. There the logistic was for the vessel operations, then after rake operations, and then after TT loading and unloading operations. 3 logistic were there. So we have a different clients because IOCL, Reliance, and IOCL, Reliance, and ONGC previously in the company. So we were taking product from the vessel. It's a mean of transport. We have different mean of transport, and suppose that vessel is just, I think minimum costing we are doing in the vessel, because at a time we almost take a lot of quantity from vessel. Then after there is a rake operations. Rake operation is same as a logistic, and then after it's a TT loading and unloading operations. Some of things were also that I want to say that we have some pipelines also. From pipelines also we used to take receipt of the product. Not product we are handling as a MS. I'm just, I think Ritesh is well known about these all things, but explaining to you also that MS is a motor spirit that you used in the petrol. It's a common name used that it's petrol, and HSD is a high speed diesel. Diesel that you are getting from the petrol pump. And apart from this, we have a naphtha and the Blackwell. Blackwell is also we are using in vessels also and somewhere, and naphtha is also using in some other things. So currently, I'm also handling here in the Repono. It's the same thing, but in the Repono, we are just taking the product from the pipeline. And the mode of logistic is what we have only TT. TT is a tanker. Suppose we are taking some 5,000 kl of something quantity from the pipeline. Then after we have some storage tanks according to the product. We store that product in the storage tanks. Then after we just transfer that the whole amount of the product through the TT. We have a tanker of different kl. Different kl, it means 12 kl, 15 kl, 20 kl, 25 kl, 30 kl. Okay, then we used to transfer that whole the product from the tanker only to the petrol pumps on us. So the logistic things are there. So in which we have to plan the TT. The planning work is there that in the previous day all the vendors or all the owners of the petrol pumps, they just put an indent. Indent, it means that they just put the quantity, how much quantity they have to take. Suppose some petrol pump, suppose I'm just telling the example, suppose a petrol pump name is Ramesh. Okay, then Ramesh in the previous day, he will put an indent that he will put, sir, I have to take 25 kl of whole product. In 25 kl, I have to take 15 kl of MS. Fine, and I have to take 10 kl of HSD. Right. He will put the indent, and that indent will show in the SAP. We have a SAP portal. Okay, the whole process will be done in the SAP only. All the
the DO will or the delivery order will be made in the SAP. All the invoicing will be made in the SAP. Apart from this SAP, we have a TAS. It's a terminal automation system. Because in this generation, what we are doing, we are not going to do with the physical work. The whole terminal, whole the things is in automation process only. Okay, automations, we have different things that SCADA is there. Okay, and then after DCS is there. DCS is the distributor control unit is there, and LCS is local. So these are the different things. If I will explain, then I think you will have to get to know all the things. And so I'm explaining the little one about these all things. So the logistic thing is there. We have to plan the TT accordingly. Suppose Right, so sir. suppose Ramesh has put the indent, then we have to take that indent, and then accordingly we have to plan. We have to give him TT. Okay, TT means tanker. We have to give him. Then we have to generate a fan. Okay, fan is the details of all the product. Okay, what we are giving to him, all the details will come in the fan slip. Then after we will go for the loading process, and after loading process we will have invoicing. Then after getting the invoice, we will release that TT. This is the whole logistics things that we are doing in the day-to-day basis. Apart from the same thing we were doing in the previous company also, in the Indian Oil, that was something different. The vessel was coming. Okay, so the vessel planning is something different. In the 1 week before earlier, you would get the details of the each of everything, which vessel is coming, on which port is coming, having which kind of quantity is there. So in the vessel, these all plannings will come before 1 week. So you have to plan to take that whole amount of the quantity in your tank or in your pipeline. And then after there is a rake. Then after there is a rake is also rake indent also same as like that the vessel. The rake indent that be placed by the IOCL, BPCL or something PSU sector. They will place the indent. Okay, that indent will show in the railways portal. Okay, that the whole wagons, we have a different kind of wagons there, BTPN and BTFLN are there. So they will just give you quantity that I have to load this one 50 ms, although because the number of highest wagons would be 50 only. So in the 50 number of wagons, they will just give you the details about how much they have to load 50 full ms or 50 HSD full, or partially they have to load some 30 ms or 20 HSD. These all things will come in the logistic. So apart from this, logistic is clear now, I think all of you. Yes, sir. I And mean, up, bolo. it's just like new for us, like since we've not been in the industry, we've just started learning about the logistics part. So Yeah. it's all very new for us, but yeah, like we're able to like make sense of what we studied in class, and now like when you're saying the process. So apart from this, what you have to do is a planning. Okay, planning of these all things. Okay, because the limitation of the time period is for everything. If the vessel will come, they have to discharge the whole product in a certain time. Okay, if in the certain time, if you're not going to discharge the whole product, then there would be some damage charges. That damage charges will be the highest amount for the vessel. Same as Okay. like that, if the rake is coming, then you have to decant that rake or load that rake in a particular time only. 6 hours is limited for decanting and loading also. So you have to plan on that way. So if you are taking apart from 6 hours, then there would be a damage charges will be added to your invoicing. Okay. And in the TT tanker also, you have to just maintain the TT cycle time. Okay. TT cycle time would be something different. If the company is saying that you have to load that TT in 45 minutes, so you have to plan that accordingly, because there are a maximum number of TT which are coming. If you have to in the morning, you will get the details that you have to just do an indent of, or you have to load a TT of 200. This is your planning for the morning. You will get the planning of today you have to load 200 TT. So somehow you have to load that TT, because if you're not going to load that one, then you have to give the explanation to all the OMC, oil marketing, that why didn't you have planned his TT on the perfect time.
So Right. accordingly, you have to think that how much time a single TT will take to load, how much time it will take to fill that one compartment. If you are taking the 1500 LPM is a flow rate. Okay, so Yeah. 1500 LPM, it means that from one bay from for one compartment, 1500 liters will come in 1 minute. If they are taking 5000 KL, it means 5000 liter, then it will take approx 3 minutes and 3.5 minutes. So this is Okay. the whole planning that you have to think about this, that how you have to plan this TT, how you have to fill this TT. And although what matters is that client satisfaction. ठीक है, Right. वो सबसे Yeah. ज्यादा मैटर करता है, क्लाइंट सर्टिफिकेशन मैटर करता है, बिकॉज यू हैव टू जस्ट कीप योर क्लाइंट हैप्पी एट एनी कॉस्ट. Overall, you are doing that. This is all the planning operations is there, in which you have to perform some extra things also. You have to think about, you have to talk with the client, you have to talk with the sales manager, because every location or every outlet is having some sales manager also. So they will call you, madam, this is my indent, okay, this is the urgent indent that we have to feel that that pump is going to be dry, and we are not going to keep that pump dry, because if the pump will be dry, then the sales managers will get some harassment from his upper one. Why your pump is dry? Why your pump is not having some product and all? So sales manager also having some pressure. So that pressure will comes to you only, because you are the planning officer. You have to think about this. You have to plan about this. Okay. So these all things you have, as a planning officer, as a logistic, you have to think about these all things. And apart from this, the whole things will come in the single word, that is operations. Whatever you are doing, that is TT planning. Whatever doing, that is tank farm. Tank farm is something different, because we are having some big tanks is there, having a quantity of 20,000 KL, 30,000 KL. Okay. Okay. So Yeah. these big tanks are there, and what you are doing, you are just going to retain a volatile product, class A product, that is so volatile, that is having flashpoint is different. We have to handle this whole operation with the whole safety, culture. If somehow you just Right. commit a little mistake, little mistake, if you've done in the whole operations, then that will affect as like a bomb, because you are dealing with a bomb, Right. literally. Right. Because MS is so volatile, naphtha is so volatile, ATF is so volatile, HSD is also so volatile. So every day you are just dealing with the bomb. So the whole operation is there, that you have to think about how you have to conduct the whole operation. It is not like that TTs came and we are loading. It's not like that. It is like that, from tank to TLF area, the product is coming. From TLF to tanker, the product is going on. Okay. So the whole operation will come Yes, under sir. this. Apart from this, what you have to think about the maintenance of the each and every equipments. Fine. In the oil and gas Right. standard industry, there is just some statutory bodies there. That is OISD. It's the oil industry standard. So you have to follow that one. According to OISD, there are different. I think there are more than 300 OISDs there. For each and every equipment, for each and every maintenance, there is some specific OISD. If you are dealing with the operation, then the OISD is 244. If you are dealing with the electrical department, the OISD is 137. If you are dealing with the pumps maintenance and something like that, OISD is 119. So although you have to follow that OISD also, if you have to do the preventive maintenance of the tanks in the yearly, though those all points are just mentioned in the OISD. You have to follow, you have to check whether these points have been completed or not, whether you have done this or not. Because in the audit time, meanwhile, some auditors will come. There is always in the PSU sector, there is always auditors will come. All of a sudden they will come. Even they will not inform you, madam, I am coming. All of a sudden you found in the gate, sir. Hi, madam, I have came now. Just show me your terminal. It's like that. So they will just look out all the operation, how you are dealing. They will just check out each and everything of your checklist, how you are maintaining the checklist,
they will also look out the downtime, how you have improved your things. Because if some bay is having in maintenance, so how you have decreased the downtime of that bay, how you have in 15 minutes, in 20 minutes, how we have done some maintenance work, and how you just keep that bay in the working conditions. So you have to think on that way also. Somehow you have to decrease the downtime of all the maintenance things and all. So there's and apart from this, what is important is the safety culture that you have to follow, because the safety is the most important, I think, because without safety you can't do anything in the whole operation and the maintenance process. So these are the whole operations according to the maintenance, according to the safety, and according to the planning that you have to think and you have to implement. So if any have something that you can just ask. I think Ritesh has already shared me the details of the question. So I'm just the first career journey and the roles and understanding. So in the career journey, I'm just telling you about myself, that how I have started these all things. So Yes. as an MBA, if you are doing some MBA in logistics, then surely you have some career growth in oil and gas sector. Because if you just see the crude, 80% of that crude, okay, that is export from outside of the country in the India, 80%. Right, sir. Okay, and export nahi, import, sorry, 80%, matlab 80% we are taking from the outside of the India. So the whole market is so big. Even we have only few refineries there. Jamnagar refinery, Reliance is there. That is a big refinery, I think, in the Asia. And IOCL refinery is there. BPCL refinery is there. But all of this, what we are doing, we are just importing. We are just exporting the 20% of the fuel to the other countries. And crude is something like that now. The whole crude, if the crude will come in the single crude, we can get all the products, LPG, okay, then Right. we can get the MS, then after we can get the naphtha, then after we can get the HSD and the ATF. In the crude oil itself, there is a distillation process in the refinery. Then after going that distillation process, we will get the whole the things that we need in the our country. And somehow we all are facing that crisis because of the America war and Iran war. We are having some crisis now. LPG, we are not getting the LPG on time, because somehow the whole of the things that we are just taking from outside of the country. And what is that? That is only crude oil. Right. So in the different, if you just go into deeply, then the cost of the crude oil is something different. Then there should be some state charges are different that we are just going to include. Then some other charges are also included. Then that will comes to the company. Then after company, that will go to the vendors. So in the between, the vendors are getting not much more than that. The vendors are getting just a little amount, 2 to 3 liters, having that difference. They are getting profit of it. Right. So Excuse me, bolo. sir, I have a question to ask. Sir, you mentioned about the SAP portal that you use. Hmm. So we have we wanted to ask you if, like how important SAP is as a fresher if we want to apply for any company. So how important will SAP be if we want to learn it and maybe give the exam and all, or is it about like just having a basic knowledge? Is it enough, like as a fresher? As a fresher, if you ask that for me, then SAP is most important, because in all the sector, not only in the oil and gas sector, in each sector, in the inventory, in the logistic, in maintenance, okay, in each sector, right now the India is using is only system application for SAP only. ठीक है, Right. तो वहां पे ऐसा है कि मतलब आपको ऐसा नहीं है कि आप ऑयल एंड गैस सेक्टर में हैं तो आपको सिर्फ एसएपी सीखना नहीं, एसएपी आपको सीखना है, अभी आप सीख लो, ठीक है. दे Right. आर आई हैव आल्सो डन some certification course in the SAP apart from this job.
क्योंकि मेरे को सीखना था, ठीक है, क्योंकि हर जगह Right. पहले ऐसा था कि इन द पीएचसी सेक्टर दे वी आर यूजिंग सम जेडी और सम ओरेकल। अभी जेडी रिप्लेस हो चुका है, बहुत साल पहले जेडी रिप्लेस हो चुका है। नाउ वी आर जस्ट डीलिंग विद एसएपी ओनली, ठीक है, एसएपी पे ही हम डील कर रहे हैं। Right. हाँ, तो अभी क्या है कि एसएपी में आपको सारा का सारा, मतलब आपका सारा का सारा डिटेल्स उसमें ही है, ठीक है। यदि आपको कोई भी चीज करना है, यदि आपको कोई भी चीज का मेंटेनेंस वर्क करना है या लॉजिस्टिक वर्क करना है, ठीक है, तो उसमें एक आप उसमें डाल के रखो, देन यू विल ऑन अ डेफिनेट टाइम यू विल गेट अ पॉप अप ऑफ दिस थिंग। मान लो मेरे को एक टैंक का क्लीनिंग करना है 5 इयर्स के बाद, ठीक है, मैंने एसएपी में डिटेल्स डाल दिया, उस पर्टिकुलर कोड और उस पर्टिकुलर डिटेल्स में सारा टैंक का डिटेल्स डाल दिया, ठीक है। अभी मैं 5 साल तक, मान लो मेरे को याद नहीं रहा ना, जब 5 साल कंप्लीट होगा ना, देन आई विल गेट अ पॉपअप कि सर आपको ये टैंक क्लीन करना है, ठीक है। यदि मेरा फ्रीक्वेंसी 6 मंथ का है, ठीक, किसी पंप का मेंटेनेंस करने का, तो 6 मंथ में मैंने उसमें सारा डिटेल्स मैंने एसएपी में डाल दिया, तो ऑन दैट टाइम एसएपी विल इन्फॉर्म मी कि सर आपका 6 मंथ कंप्लीट हो गया है, यू हैव टू डू दिस मेंटेनेंस ऑफ दिस पंप। Right. तो somehow the whole market is right now, the whole market is SAP। तो मैं सबको बोलूंगा कि आप लोग सब लोग कर लो सर्टिफिकेशन, यू जस्ट गो विद सर्टिफिकेशन कोर्सेज, ठीक है। और सर्टिफिकेशन कोर्सेज वो आपको बूस्ट भी करेगा, ठीक है, आगे जाके, एंड यू विल वो आपको कहीं पे मतलब जब भी आप कहीं पे काम करेंगे ना, तो वहां पे आपको नॉलेज रहेगा, क्योंकि उसमें सारे के सारे कोर्स हैं दैट यू हैव टू गेट टू लर्न। बहुत इजी है, ऐसा मत सोचो कि बहुत वास्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। बस आपको क्या है, उसके कोर्स याद करने पड़ेंगे, हाँ, वो आप याद करो, डन, बस। So, sir, is like you doing it on Coursera and all those online platforms enough, or should we go for the proper SAP, like the one like हाँ, SAP की साइट से जो मिलता है? देखो एसएपी के साइट से आप जाओगे ना, तो उसमें थोड़ा सा प्राइस डिफरेंस रहता है, आप समझ रहे हो ना, कि जो ऑनलाइन बहुत सारी साइट्स हैं जो आपको बोलेंगे कि 25,000 30,000 में हम आपको सर्टिफिकेशन दे देंगे, दे विल श्योरली गेट यू सर्टिफिकेट। वो आपको क्लासेस भी अरेंज कर देंगी, ठीक है, वो आपको डिटेल्स भी बता देंगी, आपको असाइनमेंट्स भी दे देंगी करने के लिए, उसके बाद आपका एग्जाम होगा, आप वो एग्जाम क्वालिफाई करोगे, देन आफ्टर यू विल गेट द सर्टिफिकेट। पर जब आप प्रॉपर एसएपी में जाओगे ना, थोड़ा प्राइसिंग हाई रहेगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। Right. तो Okay. मैं यही कहूंगा, इफ यू आर फॉर इन्वेस्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम और आपको एक बार में ही इन्वेस्ट करना है और कुछ करना है, तो आप उस कोर्सेज के लिए जाओ, छोटे मोटे कोर्सेज के लिए मत जाओ, ठीक है। Right, sir. Okay. हाँ, अभी क्या है, दूसरा क्या है, 1 मिनट। Miss Me, am I audible? हाँ, रितेश, टेल मी। हाँ, रियल चैलेंजेस, देखो रियल चैलेंजेस जब आप फेस करते हो ना, कि जब आपका जो टाइम मैनेजमेंट है ना, जो आपको एक स्पेसिफिक टाइम मैनेजमेंट दिया जाता है, ठीक है, कि आपको इस स्पेसिफिक टाइम मैनेजमेंट में ही आपको ये लॉट्स ऑफ वर्क आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो उस टाइम पे आपके ऊपर एक प्रेशर रहता है कि नहीं भाई, आज जैसे मैं ऑफिस गया, ठीक है, मेरे को इतने इतने सारे पॉइंट्स मैंने डायरी में नोट डाउन, आई जस्ट यूज्ड टू नोट डाउन इन द डायरी दैट आई हैव टू कंप्लीट दिस टास्क। समहाउ रियल टाइम क्या होता है कि समहाउ आपका पूरा का पूरा फुल ऑपरेशन चल रहा है, सपोज फुल ऑपरेशन आपका बहुत स्मूथली चल रहा है, समहाउ इफ समथिंग इंसिडेंट विल हैपन, मान लो मेरा एक डिस्पैच चल रहा है टैंकर का, ठीक है, और वहां पे ऐसा हुआ कि कोई ईएसडी कमांड रेज हो गया, ठीक है, ईएसडी इमरजेंसी शटडाउन कमांड, वो वहां से रेज हो गया, ठीक है। वहां से रेज होने के बाद मेरा पाइपलाइन का प्रेशर काफी बढ़ गया, ठीक है, मेरा क्योंकि मेरा बॉडी वाल्व क्लोज हो गया, पाइपलाइन का प्रेशर बढ़ गया, तो वहां पे हमें रियल चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं कि सो दैट हम क्या करें, सो दैट कि हमारा जो पाइपलाइन का प्रेशर भी रिलीज हो जाए, हमारा प्रोडक्ट भी रिसीव हो जाए, ठीक है। और हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हाउ यू हैव टू सेव द इक्विपमेंट्स, जो आपके एसेट्स है ना, जो आप यूज कर रहे हो, ठीक है, वो काफी कॉस्टली हैं, ठीक है, क्योंकि आपके एसेट्स जो आप यूज कर रहे हो वो एक बार खराब हो गया, देन यू हैव टू चेंज ऑल द एसेट्स। एसेट चेंज तो हो जाएगा, ठीक है, दैट विल टेक टाइम, बट आपको क्या फील होगा, आपके साथ क्या होगा कि आपका जो रियल जो टाइम है वो काफी एक्सटेंड हो जाएगा, देन यू हैव टू आंसर विद योर क्लाइंट। तो उस टाइम पे हम रियल चैलेंजेस फेस करते हैं कि हाँ, इस टाइम पे हमें कैसे हैंडल करना है, कैसे करना है, मतलब
हम अपने क्लाइंट से बात करते हैं, ठीक है, जहाँ पे कुछ डिस्पैच चल रहा है वहां पे बात करते हैं कि सर ऐसा ऐसा कुछ सिनेरियो हो गया, यू जस्ट गेट मी सम टाइम, आई विल जस्ट सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड विल टेल यू इन 30 मिनट्स, 40 मिनट्स और 1 आवर। तो दीज आर द रियल चैलेंजेस जो हम इस ऑयल एंड गैस सेक्टर में फेस करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑयल इंडस्ट्री आई डोंट हैव मच आइडिया। कभी कभी ऐसा होता है कि सपोज वी आर हैविंग ओनली वन पंप इन द, वो पंप हमारा खराब हो गया, ठीक है, ठीक है, अभी क्या है कि जैसे ही पंप खराब हो गया आपका टीटी लोडिंग बंद हो जाएगा। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है कि आपका जो टीम है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए ना कि वो उस टाइम पे आके उस पंप को रिपेयर भी कर दे और विथ मिनिमम टाइम पे, ठीक है। तो हम उसके अकॉर्डिंग सोचते हैं कि यदि हमारा कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, उसके साथ जो टेक्नीशियंस है, इफ तो हम उनसे पूछते हैं कि भाई वो मतलब काम करने के लिए है कि दे हैव सम नॉलेज ऑफ, बिकॉज थ्योरी नॉलेज इज डिफरेंट थिंग, आई एम जस्ट सेइंग थ्योरी नॉलेज इज समथिंग डिफरेंट, बट व्हाट यू डन इन द फील्ड ना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो उस टाइम पे हमें टेक्नीशियंस पे हम हायर करते हैं, हम उनसे हमेशा पूछते रहते हैं कि यू नो द अलाइनमेंट ऑफ द पंप, ठीक है, तुमको पता है कि पंप का अलाइनमेंट कैसे करना है, यू नो द हाउ इफ द कपलिंग विल गेट रप्चर्ड और यू नो हाउ टू रिपेयर द कपलिंग, ठीक है, तुम्हें पता है क्या कि मैकेनिकल सेल को कैसे हम रिप्लेस कर सकते हैं, यदि बूस्ट टूट गया पंप का तो हम कैसे रिप्लेस करते हैं। तो दीज आर द थिंग्स दैट वी फेस, ठीक है। पर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग टीम रहता है, स्ट्रॉन्ग टीम के साथ हम भी खड़े रहते हैं कि whatever they are doing we're just in the background of as a backbone, ठीक है। तो उस टाइम पे वो करते हैं, फिर हमारा डाउन टाइम करके के फिर हमको इनर्जाइज करके पूरा ऑपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सब चीजें हम ऑपरेशंस में और मेंटेनेंस में, लॉजिस्टिक में, सब में हम लोग फील करते हैं और हम लोग फेस भी किए हैं बहुत सारा टाइम। हाँ, और कुछ? As in logistic and supply chain, how can we enter into industry? Sorry, how can we? Enter like oil and gas. How can we enter into that industry? देखो, लॉजिस्टिक का उतना मेरे को आइडिया नहीं है, पर यहाँ पे जो मतलब जो लॉजिस्टिक है ना, आपका पूरा का पूरा जो ऑयल एंड गैस सेक्टर है, आप देखो तो वो पूरा का पूरा लॉजिस्टिक पे डिपेंडेंट है, ठीक है। समहाउ वी आर टेकिंग द क्रूड ऑयल फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द कंट्री, ठीक है, वो शिप से ही आता है, ठीक है। वी हैव द ओनली वे ऑफ दैट टेकिंग दैट प्रोडक्ट इज शिप ओनली, ठीक है। तो वो शिप से आ रहा है, शिप के बाद वो रिफाइनरीज में जा रहा है, फिर रिफाइनरी से वो उसका सारा का सारा प्रोसेस हो रहा है, डिस्टिलेशन हो रहा है। फ्रॉम रिफाइनरीज देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। रिफाइनरी के बाद हमारे पास सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, शिप्स भी है, रेक्स भी है, ठीक है, टैंकर्स भी है। फिर वहां से वो डिस्पैच होके फिर डेपो में आ रहा है या टर्मिनल्स में आ रहा है, फिर टर्मिनल में स्टोरेज हो रहा है, फिर टर्मिनल से स्टोर होके वो डिस्पैच हो रहा है, उसमें भी डिस्पैच हो रहा है, तो वहां पे भी बहुत सारा चीज है। तो पूरा का पूरा यदि आप देखोगे तो पूरा का पूरा वो लॉजिस्टिक ही है, प्रॉपर लॉजिस्टिक है। तो एज इफ यू आर डूइंग एमबीए इन लॉजिस्टिक और समथिंग लाइक दैट, ऑयल एंड गैस सेक्टर में आप आराम से जा सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और यू हैव अ ब्राइट करियर आल्सो इन द ऑयल एंड गैस, सो डोंट थिंक अबाउट दिस। Hello, sir. Sorry for the inconvenience. My mic was not working. You have talked about customer satisfaction and the current geopolitical situation. So, what is the impact of current geopolitical situation which is hampering the customer satisfaction? हाँ, अच्छा है। अभी क्या है कि देखो, एक्चुअली कस्टमर सेटिस्फैक्शन कैसे होगा, if you just think about that, you have to get 2000 liter of water per day, ठीक है, for taking your home care. I'm just giving you example. Somehow something happened or some crisis has happened, or you're not able to get that one you're just getting that 100 kl, so somehow you have to manage. तो यहाँ पे क्या हो गया कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन आपका जीरो हो गया। तो व्हाट यू हैव टू थिंक, यू हैव टू थिंक फॉर द अदर ऑप्शंस। अभी क्या है कि ऑयल एंड गैस में हम पेट्रोल, डीजल, ठीक है, एटीएफ और एलपीजी और सीएनजी, इस पे हम डिपेंडेंट है। द पीपल आर नॉट थिंकिंग अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है। हम अभी यही सोच रहे हैं कि भाई ये जो रिसोर्सेस है वो मेरे को मिल जाए, पर रिसोर्सेस का ऐसा होते हैं कि रिसोर्सेस हमेशा आपके पास नहीं रहेगा।
वो कभी न कभी आके वो एग्जॉस्ट होगा, कभी न कभी क्राइसिस आएगा फ्यूचर में कि जो आपके रिसोर्सेस खत्म होंगे. सो व्हाट as a you all guys, you have to think about कि apart from this what resources we can generate. अभी किसी ने ये नहीं सोचा है कि हाँ एक बायोगैस भी है. मैं अभी कुछ दिन पहले पढ़ रहा था कि बायोगैस भी है, वहां से भी हम उसको वो एक रिन्यूएबल सोर्सेस भी है, उसकी कॉस्टिंग भी बहुत कम है. ठीक है, और जैसे हम सीएनजी और एलपीजी यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे हम वो बायोगैस भी यूज कर सकते हैं, पर हमारे पास प्लांट्स नहीं है, बहुत कम प्लांट है. ठीक है, अभी क्या है कि गवर्नमेंट सोच रही है कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे इसको किया जाए. ठीक है, पर आपको ये सोचना पड़ेगा एज अ ट्रेनी और समथिंग लाइक दैट. यू आर द जस्ट ब्राइट, यू आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, आई नो. सो यू विल हैव टू थिंक अपार्ट फ्रॉम द बॉक्स. तुमको बॉक्स के हट के सोचना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि Yes. जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन रहता है ना, कस्टमर सेटिस्फेक्शन विल नॉट बी फुलफिल एनी टाइम. ठीक है, 100 डेज में ऐसा होगा कि 100 डेज आपका सही है. ठीक है, 100 के बाद जो 5 दिन होगा ना, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा क्राइसिस होगा दैट यू विल हैव टू फेस दैट वन. ऑन दैट क्राइसिस आपको ऐसा लगेगा कि हाँ कस्टमर जो सेटिस्फेक्शन है वो 0 हो गया. सो समहाउ यू हैव टू थिंक अपार्ट फ्रॉम दिस कि नहीं हमारे पास ये रिसोर्सेस है राइट नाउ, पर अभी क्या है कि हमें ये रिसोर्सेस के बारे में नहीं सोचना है, हमें कुछ और रिसोर्सेस के बारे में सोचना है. So basically, you are saying to find out the alternative before the crisis happens. राइट. तो वो सोचना पड़ेगा. Yes, sir. Thank you so much. थैंक यू. Sir Ashita this side. From your personal experience, what was the gap that you have observed, and what helped you? What challenges help you grow in your managerial positions or in your job particularly? All right. Actually, previously in that company, na, somehow this is something professional that I just want to share with you all. तो ऐसा होता है कि जब आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो ना, तो यू हैव टू हाईलाइट योरसेल्फ फर्स्ट व्हाटएवर यू आर डूइंग. ठीक है, तो मतलब ऐसा होता है कि लोग काम कर रहे हैं, मान लो गौरी काम कर रही है. ठीक है, गौरी जस्ट कमिंग टू द ऑफिस डूइंग हिज 8 आवर्स. ओके फाइन, एंड ही इज परफॉर्मिंग वेल. ठीक है, पर गैप्स कहाँ पे आ रहा है कि गौरी कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है. समझ रहे हो, गौरी कम्युनिकेट नहीं कर पाई है हायर मैनेजमेंट के साथ कि सर मैं ये काम कर रही हूँ. ठीक है, ये मेरा टारगेट है, मैंने इस महीने में इस टारगेट को अचीव किया है. ठीक है, गौरी वो नहीं कर रही है. गौरी बस क्या कर रही है, गौरी आ रही है, गौरी इज जस्ट डूइंग 8 आवर्स वर्क एंड गौरी इज गोइंग. तो वो आपका एक गैप है. सो वो एक ऐसा गैप है ना दैट कैन बी फिल्ड बाय सम अदर पर्सन. ठीक है, गौरी के पास टैलेंट है, गौरी इज हैविंग अ गुड नॉलेज आल्सो विद द टेक्निकल एंड ऑल द थिंग्स. ठीक है, बट भूमिका इज लाइक दैट. भूमिका इज जस्ट शोइंग ऑल द थिंग्स टू द मैनेजमेंट. सर मैंने ये किया, सर मैंने ये किया, सर मैंने ये किया. ठीक है, तो मैनेजमेंट के इन द आईज ऑफ मैनेजमेंट व्हाट मैनेजमेंट इज सीइंग दैट गौरी, मैनेजमेंट को क्या लगा गौरी के पास नॉलेज है, सब कुछ है, पर गौरी इंटरेस्टेड नहीं है. भूमिका को क्या है कि भूमिका को लगा कि भूमिका के पास नॉलेज कम भी है पर लर्निंग ज्यादा है. So the management will think about Bhumika first, apart from the Gauri. तो ये जो communications gap होता है ना, ये communications gap is the most relevant gap that I have faced. In the previous company, it was like that. I was performing well, having good scores also I was getting, but it was like that I was not communicating with the higher management. So somehow I felt that gap कि मेरे पास knowledge भी है, मेरे पास capabilities भी है, मेरे पास हर चीज का पता है, लेकिन मैं मैनेजमेंट के साथ नहीं कोरिलेट कर पा रहा हूँ. ठीक है, फिर मैंने वो सारी चीजें बंद किया. बंद करने के बाद मैंने कम्युनिकेशन करना स्टार्ट किया मैनेजमेंट के साथ, सब कुछ किया. एंड देन आफ्टर ऑल ऑफ सडन आई जस्ट फाउंड द ग्रोथ ऑफ दिस वन. Yes, sir. So that gap you have to just follow up when you are working in some professional or something like that. So just be in the mind that your communication is always important. So how do you fill this gap? Like how do you show to the management that you are doing all the work? Good. This is all the thing that देखो, apart from your daily work, ठीक है, आपका जो डेली टास्क है वो होता रहेगा.
ठीक है, अपार्ट फ्रॉम वो आप आओगे, आप काम करोगे, आप नहीं भी रहोगे, आप भूमिका वो आपका काम कर देगी, भूमिका नहीं भी है, अवस्था काम कर देगी, पर कंपनी का काम रुकता नहीं है, जान लो। ठीक है, कोई ना कोई रहेगा जो आपका काम करता रहेगा। पर कंपनी में जब आप कॉर्पोरेट लाइफ में रहते हो तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ बग्स रहता है जो कंपनी के अंदर ही रहता है। तो आपको क्या करना है कि उस बग्स को फिगर आउट करना है। ठीक है, जैसे जैसे मान लो मैं ऑयल एंड गैस सेक्टर में हूँ। ठीक है, अभी मैं जिस कंपनी में ज्वाइन किया वहां पे बहुत सारे गैप्स थे। ठीक है, गैप्स था कि मतलब जो ओआईएसडी का ऑडिट हुआ था, उस ओआईएसडी के ऑडिट में इवन 40 to 50 ऐसे पॉइंट्स थे जो ओआईएसडी ऑडिट में उसने लिखा था, एंड इन द प्लान नो वन वाज रेडी टू implement that one or to take initiative। मैं आया, ठीक है, मैं आके वो सारे पॉइंट्स मैंने सबसे पहले पढ़े। ठीक है, उस 40 पॉइंट्स में से 10 तो ऐसे पॉइंट थे कि जो एक दिन में होने वाले थे, सिंगल डे। पर क्या था कि लोग काम कर रहे हैं 8 घंटा और जा रहे हैं, बस दैट वाज द थिंग ओनली। they are not thinking about that we have to just do this work, we have to implement this work, we have to initiate। तो वो एक गैप था। वो 10 दिन में मैंने वो 10 दिन 15 दिन में मैंने वो सारे जो 10 पॉइंट्स थे मैंने क्लोज कर दिए। क्लोज किया तो somehow I have to highlight those things to the HR also कि सर मैंने किया है, भूल जाओ। या in the corporate life no one is going to save you, you can only save yourself। Right। ठीक है, तो उसमें क्या है कि मैंने 10 पॉइंट क्लोज किए, मैंने एक लंबा सा ड्राफ्ट बनाया, उसके अगेंस्ट में उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स डाले और मैंने मेल कर दिया। तो मैनेजमेंट इज लाइक दैट फ्रॉम 6 मंथ। ठीक है, 6 months the 40 points was left, Aditya came, joined the organization, now the 30 point is left only। Right। so these are the gaps that you have to fulfill। और उसके लिए क्या है कि उसके लिए आपको खुद सोचना पड़ेगा, उसके लिए आपको खुद बग्स वो फाइंड आउट करने पड़ेंगे और उस पर काम करना पड़ेगा। Right, sir। हाँ, Thank you। Hi, sir. Vishal this side. या विशाल। Sir, I have one question that how important is domain knowledge versus general knowledge management skills in your role? Sorry, just come again। Sir, I was just asking that how important it is to have a domain knowledge versus general management skills in your role. Domain role could you just explain the domain role, what you are saying, like the I'm Domain not getting that। knowledge, just like we are pursuing in logistics and in supply chain, that we are inheriting from the book one, and that general management skill that you come from the practical knowledge that you are gaining inside the industry. हाँ, ठीक है, देखो, the domain knowledge is that you are getting the theory of each and everything। ठीक है, अभी मैं आपका I'm just giving you example that in the engineering I have learned about the pumps। Ritesh got it? In engineering we have learned about the pumps, the different types of pumps, the centrifugal, PD pump, ठीक है, reciprocating pump, and different types of pumps is there। So in the domain knowledge we can only get the knowledge about the theory itself, but in the practically what you are doing that is something different। ठीक है, अभी आपको क्या है कि आपने सिर्फ पंप के बारे में पता कर लिया है, पर in that domain knowledge nobody is going to teach you how to prime the pump। ठीक है, पंप को प्राइम कैसे करना है, ठीक है, पंप को कैसे चलाना है, पंप का सक्शन प्रेशर कैसे मेंटेन करना है, पंप का डिस्चार्ज प्रेशर कैसे मेंटेन करना है। ठीक है, व्हाई द सक्शन लाइन इज बिगर देन द डिस्चार्ज लाइन। ठीक है, उसके बारे में क्या सोचना है, उसके बारे में क्या हो सकता है कि हाँ भाई फ्रिक्शन लॉसेस है इसलिए हम सक्शन लाइन का ज्यादा लेके चलते हैं, डिस्चार्ज को हम कम करते हैं। सो दीज ऑल थिंग्स यू विल गेट टू लर्न इन द फील्ड इटसेल्फ ओनली, वो आपके थ्योरी नॉलेज से नहीं होगा। ठीक है, तो most of the things I have seen in this generations that some trainee is coming in my after that Ritesh, some more trainees came, okay, and the person was like that, sir, I know the parts of the pump, I know the theory of the pump। तो मैंने बोला बेटा ठीक है, तो एक काम कर, मेरे को पंप प्राइम करके बता दे। ठीक है, तो यदि पंप को प्राइम कर लिया
तो मेरे को मालूम चलेगा कि हाँ तेरे पास नॉलेज है। यदि तू पंप को प्राइम नहीं कर पाया तो मेरे को लगेगा तेरा नॉलेज तेरे पास बेस्ट है। दे आर लाइक दैट कि सर मेरे को डर लग रहा है। मतलब डर क्यों लग रहा है? मैंने बोला मैं यहीं पे हूँ, मैं यहीं पे तेरे साथ हूँ, सब कुछ तेरे साथ ही होगा, मैं हूँ यहाँ पे, तू बस पंप प्राइम कर ले, वो भी पीडी पंप है। ये वो बोला सर पीडी पंप को हम प्राइम क्यों करते हैं? तो मैंने बोला हाँ यार बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो वो बोला कि वो तो ये तो सेल्फ प्राइमिंग पंप है सर, फिर हम वाई वी आर प्राइमिंग दिस पंप। तो मैंने बोला कि भाई पहले सोच कि हम इसको प्राइम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्राइम करने के लिए आपको पूरा का पूरा प्रोडक्ट होना चाहिए ना लाइन में। आपका लाइन यदि 500 मीटर लंबा है और वो लाइन पहले से खाली है, ठीक है, 500 मीटर लंबा आपका लाइन है सक्शन का, ठीक है, वो पहले से खाली है, ठीक है, और आप पंप चलाओगे तो व्हाट डू यू थिंक दैट पंप विल गेट ऑटोमेटिकली प्राइम? पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या है कि आपके मन में क्या आया कि मेरे को ये पंप है, इसको ऑन करना है, कंट्रोल रूम में बोलना है कि कंट्रोल रूम आप पंप स्टार्ट कर दो एंड दैट पंप विल ऑटोमेटिकली प्राइम। नहीं होगा प्राइम, क्योंकि आपने जो थ्योरी में पढ़ा है, थ्योरी में आपको ऐसा कुछ लिखा नहीं रहेगा ना कि हाउ टू प्राइम दिस पंप, वो नहीं, बस आपको प्राइमिंग प्रोसेस लिखा रहेगा, ठीक है। आपको सिर्फ प्राइमिंग प्रोसेस लिखा रहेगा कि हाँ कैसा प्राइमिंग प्रोसेस है, क्या है, पर कैसे करना है वो आपको फील्ड में जाके मालूम चलेगा। कि जब तक आपका जो आपका बैक साइड का लाइन है, जो सक्शन का लाइन है, वो फुल्ली फील्ड नहीं होगा तो आपका पंप प्राइम नहीं होगा। तो उसको फुल्ली फील्ड करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? दैट यू हैव टू वेंट, आपको वेंट ओपन करना पड़ेगा। वेंट में जो ऑलरेडी एयर है वो एयर सब लाइन का निकल जाएगा, ठीक है। जब प्रोडक्ट आपका फील्ड हो जाएगा तब आपका पंप प्राइम हो जाएगा। तो जो डोमेन का नॉलेज है ना विशाल, और जो हम इंडस्ट्रीज में जो प्रैक्टिकली नॉलेज होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। हाँ, पर आपको इफ आपका जो डोमेन नॉलेज है ना वो स्ट्रांग है ना, स्ट्रांग है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो आपका प्रैक्टिकल जो आप कर रहे हो, ठीक है, अभी क्या है कि हमने पंप प्राइम कर दिया, अब ऑल ऑफ सडन में आया, विशाल से पूछा कि विशाल एक बात बताओ, ये 20 इंच का पाइपलाइन है, ठीक है, तो इसमें हम मैक्सिमम कितना फ्लो रेट ले सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया, फिर जो प्रैक्टिकल बंदा है वो तो कैलकुलेट नहीं हो पाएगा ना उससे, लेकिन जिसका डोमेन नॉलेज अच्छा है वो बोलेगा सर 20 इंच का पाइपलाइन है ना, ठीक है, मैं कैलकुलेट करके आपको देखता हूँ कि मैक्सिमम हम कितना रेट इससे ले सकते हैं। सो इंडिविजुअली बोथ थिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको डोमेन नॉलेज भी चाहिए होगा, पर मेरे हिसाब से देखा जाए तो डोमेन नॉलेज इज गुड, ठीक है, बट प्रैक्टिकली नॉलेज इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर परफॉर्मिंग एनी जॉब। ओके सर। हाँ, और किसी का कुछ है? No, sir. I think we are all done with the questions. Thank you so much, sir, for giving us your time and giving us a lot of insights on the corporate world. Yes, sir. Thank you so much for giving us your time. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Yeah. हाँ गौरी, अभी कुछ पूछना है क्या? म्यूट है गौरी, म्यूट है, आई थिंक। I'm so sorry. So I was just saying that we had a very informative session. Thank you so much for guiding us. ओके ओके ओके, भूमिका ऑल ओके? Yes, sir. विशाल? हाँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रितेश। ओके, टेक केयर, बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank Yes, sir. Bye, sir.